Good afternoon, everyone. So, आज MCQ टेस्ट नंबर 12 मॉक टेस्ट नंबर 12 आउट ऑफ 28 आज हमें क्लास डिस्कस करिबा. Before that, before starting the class, before starting the discussion class, just मते टे क्लियर कर दियंतु कि ऑडियो एंड जो पीपीटी मु एठी ओपन करिछि जहाँ भी एनोटेट करछि सेगुडी को सब क्लियरली विजिबल अछि कि नहीं, ऑडियो इनफ ऑडिबल अछि कि नहीं. आई एम गिविंग 60 seconds for that. After that, I will just assume कि सब ठीक अछि एंड डिस्कशन क्लास तापर हमें स्टार्ट करिबा. Any one of you in the live chat जो माने भी लाइव अछंती केही जणे भी क्लियर कर दियंतु ऑडियो वीडियो दीटा को क्लियर अछि कि नहीं, स्पेशली ऑडियो. तापर हमें डिस्कशन क्लास स्टार्ट करिबा. ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ऑडियो भी ठीक अछि, वीडियो भी ठीक अछि. as usual जहाँ भी क्लास रे हमें करे पर क्वेश्चन 10 to 15 seconds मु देबी. जदि एंटायरली फैक्चुअल अछि ताहले मु 5 seconds भी देई पारे. 10 to 15 seconds देबी डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, मॉडरेट अछि कि डिफिकल्ट अछि. तो एत्ती जो टाइम मु देबी से टाइम फ्रेम भितरे जो माने भी ऑनलाइन अछंती, जो माने भी क्लास देखुछंती, तो से माने लाइव चैट रे ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आसु कि न आसु, भूल हो कि ठीक हो. Okay, so without wasting any further time, first question. The annual financial statement of India is presented before Parliament under which constitutional article? 110, 111, 112 or 114? I'm giving 10 seconds for this. और एटा 5 seconds देले भी हेजबा kind of entirely factual अछि, but mo still समस्त बुझाई देबी annual financial statement कहले कोन बुझा जाए. So 10 seconds रे एठी पढ़ी के आको आंसर करो समस्त लाइव चैट रे. आंसर अब आर्टिकल 112 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. तो एठी क्वेश्चन कौन कहिछि, एठी क्वेश्चन कहिछि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द यूनियन बजेट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहले एटा होछि यूनियन बजेट रो ऑफिशियल नेम. इट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ यूनियन बजेट. okay, in the constitution. And union budget रे कौन शो करा जाए? It shows the receipts and expenditure of whom? Of government of India. And ये जो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर को टाइमलाइन रु नहीं कि को टाइमलाइन जाके शो करा जाए. आर टाइमलाइन होजी बा फाइनेंशियल ईयर जहाँ को हमें कही था फाइनेंशियल ईयर होजी 1st April रु नहीं कि 31st March जाके कंसीडर करा जाए. एटा होजी फाइनेंशियल ईयर. ओके, so it legally mandates the presentation of the budget. Therefore, Article 112 होजी annual financial statement. Article 110 ताहेले कहिले कोन एटा जो रॉन्ग हबा आंसर. एटारे अछि मनी बिल. and 111 कोन एटा होछि assent to bills. बिल को assent किए दियंती?
and 111 टा काहांकर assent ऊपर deal करे, it deals with the president's assent to bills passed by the parliament, assent given by the president. ठीक अच्छे, it has nothing to do with the budget presentation. 114 होची appropriation bill. Appropriation bill मन रहिला, it allows the withdrawal of money. Appropriation bill कोण, it allows the withdrawal of money from the consolidated fund after the parliament approves the grants. ठीक अछि, आउ एटा budget रो परे आसे, it comes after the budget is presented. Question number 2, which of the following items is classified as capital expenditure in the union budget? Food subsidy, interest payments, pension liabilities, infrastructure creation. 10 seconds starts now. आंसर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. फर्स्ट आम देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहले कौन बुझो. कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू से एक्सपेंडिचर जहाँ को स्पेंड कले एसेट क्रिएट हुए, क्रिएट्स एसेट्स. The creation of assets होची one of the requirement of capital expenditure or reduces the liabilities of the government. It होची second requirement. Then third होची or gives long term benefit. जो expenditure रू long term benefit आसुतिबो. For example long term benefit रे जेमति कि infrastructure projects हमर हे गला, roads, railways, पोर्ट्स, डैम्स, पावर प्लांट्स, ए सब गवर्नमेंट बिल्डिंग. ओके, एंड जो लोन दिया जाउची गवर्नमेंट द्वारा टू स्टेट्स और पीएसयूज, जेतेबेले लोन दिया जाए ताहले लोन होची एसेट, काइना प्रिंसिपल सहित इंटरेस्ट भी हमको रिटर्न हबो, तो लोन टाकू सब बेले एसेट हिसाब रे निया जाए. तो एटा कोन हबो क्लासिफाइड, एटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एठी मु कहली जेमति कि हाईवेज हला, ब्रिज हला, रेलवे हला, तो से माने कोन करंती इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन रे कोन हुए, फर्स्ट तो एसेट क्रिएशन होची, तापरे दुई रे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होची. ठीक अछि, सो एटा गोटे कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following best defines revenue deficit? Read the options and answer accordingly. I'm giving 10 seconds. Answer number C, excess of revenue expenditure over revenue receipt. Revenue deficit कौन, जितेबले कि केतेबले आउ revenue deficit केतेबले हुए, जितेबले expenditure माने revenue expenditure जितेबले revenue receipt थारो बढ़ी जाए सेतेबले revenue deficit create हुए. Meaning government's regular income, government रा जहाँ regular income अछि सेटा enough नुहे, it is not enough to meet its regular expenses. Okay, so excess of revenue expenditure over the revenue receipts. बहुत simple question थिला एटा. Next, the mission Atmanirbharta in pulses announced in budget 2025 to 26 focuses on mission Atmanirbharta in पल्सेस जोटा कि 25 टू 26 बजेट रे अनाउंस हेची से कहा ऊपर फोकस करूची. चिकपी, मूंग, लेंटिल, एठी किछिटा पल्सेस रो ऑप्शंस दिया जाइची. जस्ट रीड द ऑप्शंस एंड आंसर विद इन 10 सेकंड्स.
आंसर हम बी तूर उरद एंड मसूर मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कौन जमती कि क्वेश्चन दे देइछि एटा बजेट 2025 टू 26 रे एटा अनाउंस हेछि आर objective is to reduce India's dependence on imports and increase domestic production of major pulses. Question number 5. The revised maximum loan limit under the Kisan credit card scheme is a very factual question. 5 seconds दौची मु समस्त जानथिबे आई होप. होची 5 lakhs. Question option number C. किसान क्रेडिट कार्ड कौन व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड एटा केबे लॉन्च हेतला ए सब डाटा जहाँ भी स्कीम अच्छी इनिशिएटिव प्रोग्राम अच्छी तार लॉन्च डेट एगुड़ा सब बहुत इंपोर्टेंट प्रिलिम्स रा ऑप्शन रे आसे 1998 रे लॉन्च हेतला प्रोवाइड कौन करे शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करे टू फार्मर्स एंड फॉर क्रॉप्स allied activities consumption needs okay तो maximum तार कैप होची 5 lakhs maximum loan limit होची 5 lakhs. Question number 6 एटी पढ़ो which institution recommends the vertical and horizontal devolution of taxes between center and states. नीति आयोग RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस कमीशन. आंसर अब डी फाइनेंस कमीशन. टैक्स डिवोल्यूशन एक्चुअली दरकार कौन पाई why tax devolution is needed. समस्ते जानथिबे कि इंडिया होची गोटे फेडरल कंट्री ता माने गोटे सेंट्रल फेडरल कंट्री एटी मु शॉर्ट फॉर्म रे लिखछि ता माने सेंट्रल गवर्नमेंट थिबो एंड देयर आर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स भी एग्जिस्ट करथिबे. तो दी जनकर रेस्पॉन्सिबिलिटी रही टू स्पेंड मनी ऑन हेल्थ है एजुकेशन पुलिस रोड्स वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा किंतु से एसबू ऊपर ना कोर इम्बैलेंस थाए. सो द सेंटर what it does it collects the most of the big taxes जेमती कि इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स GST customs excise okay and state कौन करंती they do most of the spending जेमती हेल्थ ऊपर एजुकेशन लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा. सो नेचुरली मनी सेटा शेयर केमिति हबो फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स एंड दिस शेयरिंग इज नोन एज द टैक्स डेवोल्यूशन. ओके वर्टिकल डेवोल्यूशन कौन वर्टिकल माने कौन टॉप अप डाउन डिविजन. up down division out of the total divisible pool of the central taxes केते सेंटर को जाउची आउ केते स्टेट्स मानन को जाउची. ठीक अछि ताको कुआ जाय वर्टिकल डिविजन. एंड नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिविजन. हॉरिजॉन्टल डिविजन कोन हॉरिजॉन्टल डिविजन रे हुए कि साइड बाय साइड सो डिविजन अमंग द स्टेट्स. ओके सो आउट ऑफ द स्टेट्स 41% शेयर आउ माने स्टेट्स भितर केते माने बंटा है कि जाउची. दिस इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया लाइक कोटा केते पॉपुलेशन कहार रहिला इनकम डिस्टेंस ला एरिया फॉरेस्ट एटसेट्रा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. ओके सो दिस इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन.
एंड एटा को किए निये को अथॉरिटी या को डिसाइड करे, एटा को डिसाइड करे फाइनेंस कमिशन। ओके, एंड फाइनेंस कमिशन को आर्टिकल अंडर रे आसुची, आर्टिकल 280 of the constitution. It created the finance commission, and finance commission, it is appointed every 5 years, appointed every 5 years. And our job kono kete vertical division abo, kete horizontal devolution abo, and kete grants in aid jibo states manangu. So it is the only constitutional authorized body for tax sharing. Understood? 7. The non-plan classification of government expenditure in India was abolished from which budget onwards? Plan और non-plan classification टा को budget onward abolish है गला. Read the options and answer in 10 seconds. Answer ब B. यूनियन बजेट 2016 to 17 आपर सेटा अबलिश होई। सो ता पूर्व प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन थिला? प्लान्ड एक्सपेंडिचर एटा प्लानिंग कमिशन एरा रो। सो एनीथिंग रिलेटेड टू जहाँ भी 5 year प्लान्स हो गला, डेवलपमेंट स्कीम, न्यू प्रोजेक्ट, वेलफेयर प्रोग्राम हो गला, एगुड़ा सब प्लान एक्सपेंडिचर अंडर रे आसी होतला, जेमती नुआ आईआईटी हबो कि नाही, नुआ हाईवे हबो कि नाही, एटसेट्रा। एंड नॉन प्लान कौन? नॉन प्लान हो एवरीथिंग एल्स, प्लान को छाड़ देला जहाँ भी रहा से गुड़ी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अंडर आसी जो, जमी टीचर्स, डॉक्टर, पुलिस को सैलरी केते मिलिबो, पेंशन, इन लोन ऊपर केते इंटरेस्ट लागिबो, डिफेंस एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। एंड जो रोड्स, हॉस्पिटल वरिका जो क्रिएट होई प्लान एक्सपेंडिचर अंडर रे, तांकर मेंटेनेंस से गुड़ी भी नॉन प्लान रे आसुतला। सो क्लासिफिकेशन आंक भीतर जो थिला सेटा डिजास्टर कौन पाई थिला, काहे ना हियर इज द रियल कॉन्सेप्चुअल फ्लॉ। कहना धर गोटे फॉर एग्जांपल सपोज गोटे हॉस्पिटल क्रिएट हला, यू बिल्ड अ हॉस्पिटल दिस ईयर, जोटा कि आसीगला आमर प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट ईयर कौन है, यू पे डॉक्टर सैलरीज एंड डॉक्टर सैलरी, पेंशन, एगुड़ा सब कौन कहली एगुड़िक आसीगला नॉन प्लान रे। नेक्स्ट ईयर यू बाई मेडिसिन, जोटा नॉन प्लान रे आसीगला। सो पॉलिटिशियंस माने कौन कले, दे प्रिफर्ड अनाउंसिंग न्यू बिल्डिंग्स बट नेग्लेक्टेड द मेंटेनेंस, स्टाफ, क्वालिटी, जोटा कि led to broken hospitals, for example in this case. So the system कौन करथला, it rewarded new projects but punished maintenance and quality. Okay, 2014 पर कौन हैला समस्ते जानथिबे, 2014 रे प्लानिंग कमिशन abolish हो गला एंड नीति आयोग रिप्लेस्ड इट, 5 year प्लान्स भी एंड हो गला। सो द होल आइडिया प्लान आउ नॉन प्लान इट लॉस्ट मीनिंग। 16-17 रु ताको 15-16 टा 2014 परे 15 to 16 टा आमे गोटे ट्रांजिशन फेज हिसाब रे नै थाउ एंड फाइनली 16-17 रे कोन हैला एटा ऑफिशियली रिमूव हो गला। ओके, and shifted to revenue expenditure and capital expenditure, जोटा कि logical थिला, internationally accepted भी and economically meaningful भी। Question number 8, which of the following was included under non-plan expenditure? Read the option and answer.
आंसर हम सी मेंटेनेंस ऑफ एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर कहली मु नॉन प्लान रे कोन आसे प्लान रे कोन आसे आउ थरे एक्सप्लेन करबा दरकार नहीं. Question number 9. Which of the following statements best explains a conceptual flaw of plan non-plan classification? 10 seconds starts now. Answer above C. The same activity could be planned in one year and non-planned in another. केमिति एटा गोटे बिगेस्ट लॉजिकल प्रॉब्लम केमिति थिला ए जो क्लासिफिकेशन टा थिला जाटा मु आगु डिस्कस कल एक्सप्लेन कली वाज नॉट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्पेंडिंग इट वाज बेस्ड ऑन वेदर इट फिट इनटू प्लान डॉक्यूमेंट और नॉट जहाँ भी प्लान डॉक्यूमेंट रू बाहर थिला से गुडा सब नॉन प्लान थिला दैट क्रिएटेड अब्सर्ड आउटकम्स. सो सपोज ईयर 1 रे जेमति मु कहली गवर्नमेंट गोटे हॉस्पिटल बिल्ड कला. सो एटा कोथरे आसीगला प्लान रे आसला. देन ईयर 2 रे कौन है डॉक्टर मानकर सैलरी एटा नॉन प्लान रे आसला. तापरे मेडिसिन्स जहाँ भी प्रोवाइड हम नॉन प्लान रे आसला. सो कौन है सेम हॉस्पिटल रहिला सेम पब्लिक सर्विस रहिला सेम डेवलपमेंटल पर्पस रहिला किंतु एटा को आर्टिफिशियली स्प्लिट कर दिया गला प्लान एंड नॉन प्लान रे एंड दिस डिस्टॉर्टेड द प्रायोरिटीज. व्हाई सी इज करेक्ट कहीं जो एथि लिखा है द सेम एक्टिविटी कुड बी प्लान इन 1 year एंड नॉन प्लान इन अनदर. एठी हमें देखिले एग्जांपल रू दिस मीन्स जो क्लासिफिकेशन टा हैला तार कौन सी इकोनॉमिक लॉजिक नहीं. इट एनकरेजेस न्यू बिल्डिंग एनकरेज कला देन नेग्लेक्टेड द मेंटेनेंस. Question number 10. Historically, non-plan expenditure accounted for approximately what proportion of total government expenditure? Answer above D. 65 to 70%. नॉन प्लान अंडर रे कौन आसुची एंड प्लान अंडर रे कौन आसुची सेटा तो ऊपर गोटे क्वेश्चन रे सब डिस्कस हेची हिस्टोरिकली कौन कौन आसुथला ता अंडर रे जेमति कि आउथरे मु कहि दोची नॉन प्लान अंडर रे आसुची सैलरी पेंशन फॉर एग्जांपल एगुडा सब आसला जो गुडी को रेकरिंग मैंडेटरी थिला एंड ह्यूज इन साइज. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर डोमिनेट केमती करूथला स्पेंडिंग रे काहेकि ना जो इंटरेस्ट पेमेंट जोड़ा हबो इट केप्ट राइजिंग सैलरीज एंड पेंशन से गुडी को भी बढ़ुतला डिफेंस केप्ट राइजिंग सब्सिडीज केप्ट राइजिंग. सो ओवर टाइम कोन हैला नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इट स्वॉलोड मोस्ट ऑफ द बजट. तो जो नॉन प्लान थिला एटा अराउंड हिस्टोरिकली 2/3 नहीं जाउथिला ऑफ द टोटल स्पेंडिंग एंड प्लान टा 1/3 थिला. This shows why government had very little flexibility. Most spending was already pre-committed. Question number 11. Which committee strongly recommend the abolition of plan non-plan classification? Plan non-plan classification abolition pai को committee strongly recommend करथिला? केलकर committee, NK Singh committee, रंगराजन committee, FRBM review committee. Answer is D. FRBM review committee. Committee दरकार कौन पाई पड़ला कहीं जो प्लान नॉन प्लान थिला सेटा डिस्टॉर्टिंग थिला एंड सेटा फिस्कल पॉलिसी को डिस्टॉर्ट करूथिला वेस्टफुल कैपिटल क्रिएशन को एनकरेज करूथिला एसेट मेंटेनेंस को इग्नोर करूथिला एंड जो ट्रू क्वालिटी अच्छी एक्सपेंडिचर ताको भी हाइड करूथिला. सो रिफॉर्म वाज वेरी मच नीडेड एट दैट टाइम. एफआरबीएम रिव्यू कमिटी एटा सेटअप के बेला एटा 2016 रे सेटअप हेतला एंड आर चेयरमैन थिले एनके सिंह एंड आमको टास्क दिया जाइतिला कि जो इंडिया रो फिस्कल फ्रेमवर्क अछि ताको रिव्यू करबा को एंड जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ताको इंप्रूव करबा को. सो एफआरबीएम रिव्यू कमिटी इज द करेक्ट आंसर. Question number 12. Which of the following expenditures was the single largest component of non-plan expenditure? Food subsidy, defense capital outlay, interest payments, administrative grants. 10 seconds starts now.
आंसर हम सी इंटरेस्ट पेमेंट्स इंटरेस्ट कौन पे डोमिनेट करथला बिकॉज इंडिया रन्स फाइनेंशियल डेफिसिट एवरी ईयर सो सी कंटिन्यूअसली बोरो करी चलथिला मोर बोरोइंग सो मोर इंटरेस्ट पेमेंट करिया को पड़िबो एंड इंटरेस्ट अनअवॉइडेबल भी कौन पाई जेमती कि स्कीम्स रहला यू कैनॉट अनलाइक द स्कीम्स यू कैनॉट कट इंटरेस्ट जेतिकी इंटरेस्ट दबार थिबा सेतिकी इंटरेस्ट दबा को बाध्य डिफॉल्टिंग डिस्ट्रॉयज द क्रेडिबिलिटी डिफॉल्ट कले कंट्री रो जो इंप्रेशन अच्छी सेटा इंटरनेशनली फॉल करिवो इट डिस्ट्रॉयज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंट्री सो इंटरेस्ट बिकम्स सिंगल बिगेस्ट फिक्स्ड एक्सपेंस आंसर हम सी After the abolition of plan non-plan classification, government expenditure is primarily classified into answer is D revenue and capital. এটা इकोनॉमिकली मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन रे जाए रेवेन्यू रेवेन्यू कौन पे यूज हुए कंजम्पशन प्लस रनिंग कॉस्ट पे एंड कैपिटल कोथ पे यूज हुए एसेट क्रिएशन क्वेश्चन 1 की 2 की 3 आम देखी आई एम फॉरगेटिंग जोटा कि ऊपर ऑलरेडी डिस्कस है प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ ठीक अच्छे जोटा कि अलाइन होची अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस Question 14. Consider the following statements regarding plan and non-plan expenditure. Read the statements and answer in 15 seconds. Answer about B. 1 and 3 only. Statement 1 कौन कहला plan expenditure could include both revenue and capital components. Plan रे कौन कौन जाउथिला plan रे जाउथिला हमरो so statement 1 is just a second is correct as plan spending include the salaries and asset creation. Then statement number 2 এটা incorrect अछि काहेकि ना डिफेंस पुलिस मेंटेनेंस दे आर डेवलपमेंटल इन नेचर सो एटा जो कहला कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाज एंटायरली नॉन डेवलपमेंटल इन नेचर एटा इनकरेक्ट हबो. स्टेटमेंट 3 करेक्ट अछि प्लान एक्सपेंडिचर वाज लार्जली डिस्क्रिशनरी व्हाइल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाज लार्जली कमिटेड एटा करेक्ट ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द नॉन प्लान आइटम्स जोटा कि हमें ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर सके सो 1 and 3 option number B will be the correct answer. Question number 15. Which of the following is treated as revenue receipts? Answer number D. Dividends received from the PSUs, public sector undertakings. Revenue received कौन? Regular income, no repayment obligation. Then third, no asset sale. डिविडेंड एटी कौन पाई क्वालिफाई होची काना जो पीएसयूस मानकर जो प्रॉफिट अछि दे आर पेड टू गवर्नमेंट एंड इट आर रेगुलर सो नो लायबिलिटी इज क्रिएटेड एंड
ठीक अच्छे. So dividend received from the public sector undertakings. Question number 16. Which of the following items is classified under non-tax revenue? Corporation tax, capital gains tax, interest receipts on loan given by the center, GST compensation cess. Answer number C. Interest receipts on loan given by the center. Revenue receipt simple word रे आमे कहिले कौन बुझू जोटा कि revenue receipt government रो regular income of government which do not create any future repayment obligation. गोटे future रे repayment obligation create करू नथिबो कि कोनोसी government रा asset को सेडा sell करू नथिबो. They are like person's monthly salary or business income kind of thing. Okay. दी प्रकार रा revenue receipt थाए. गोटे होची हमरो टैक्स रेवेन्यू जोटा कि मनी अर्नड बाय टैक्सिंग पीपल जोटा टैक्स कलेक्ट करछन्ती लोक मानक ऊपर टैक्स लगेई कि जोटा जो से पैसा जोटा आछि टैक्सिंग पीपल एंड कंपनी जेमति कि इनकम टैक्स हला कॉर्पोरेशन टैक्स जीएसटी एटसेट्रा एंड आउ गोटे अछि नॉन टैक्स रेवेन्यू रो पैसा कोठु आसे मनी अर्नड बाय द गवर्नमेंट नॉट थ्रू द टैक्सेस बट बाय चार्जिंग फीस एंड आउ कोन रहिला अर्निंग इंटरेस्ट by profit or dividend by providing services. For example, जो interest आसुची लोन रे interest on loans given to states or PSU से जो interest टा आसिला तांकु जो लोन प्रोवाइड करा जाइतिबो से इंटरेस्ट टा इथरे नॉन टैक्स रेवेन्यू रे जिवो एंड डिविडेंड जो आसुची PSUs मानक थारु सेटा भी जिवो फीस फाइन्स पेनल्टीज लागिला कहा ऊपर कि स्पेक्ट्रम चार्जेस एगुडी को सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रे जिवो. ठीक अच्छे. देन सी आमर एटी कौन इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स गिवन बाय द सेंटर करेक्ट आंसर हम गवर्नमेंट कौन करे गवर्नमेंट लोन दिए स्टेट्स को पीएसयू को फॉरेन गवर्नमेंट को तो जिते से लोन को पे बैक करती सहित कौन ता सहित लोन सहित प्रिंसिपल अमाउंट सहित इंटरेस्ट भी पेमेंट करती. सो द इंटरेस्ट इज रेगुलर इनकम एटा टैक्स नुह ऑब्वियसली. सो एटा एसेट सेल करके पैसाटा आसीनी एटा बोरोइंग भी नुह. सो इट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. Question 17. Which of the following capital receipts lead to reduction in the government assets? Small savings collection, external commercial borrowings, market loans, disinvestment of PSU equity. Answer number D. Disinvestment of PSU equity. What are capital receipts? Capital receipt होची those receipts which either create a future liability or reduce government assets. फ्यूचर पाई गोटे लायबिलिटी क्रिएट करूथिबो कि गवर्नमेंट रा एसेट क्वांटिटी को सेडा रिड्यूस करूथिबो. दी टाइप रो कैपिटल रिसीट्स अछंती. गोटे होची टाइप 1 होची क्रिएटिंग लायबिलिटीज एठी हमें देखले जोटा कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट धरो कोठू मनी बोरो कला फॉर एग्जांपल मार्केट लोन हैला एक्सटर्नल बोरोइंग्स अछि स्मॉल सेविंग्स अछि तो गवर्नमेंट बोरो कला मनी तो एटा कोन करे दिस गिव्स मनी नाउ बट
must be repaid later with interest. तो एथिरे कौन गोटे लायबिलिटी क्रिएट होची जे बोरो करूची मनी ता ऊपर गोटे लायबिलिटी क्रिएट होची कि फ्यूचर रे पुनी पेमेंट भी करियार अछि. टाइप 2 कौन रिड्यूसिंग एसेट्स. गवर्नमेंट सेल्स व्हाट इट ओन्स. गवर्नमेंट पाखरे जहा एसेट अछि से धर ताको बिक्री कर देला. फॉर एग्जांपल जो पीएसयूज रे धर गवर्नमेंट रो जहा शेयर अछि से ताको धर सेल कर देला. दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू शेयर्स एटा गोटे एग्जांपल हबो. सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स. सो एथरे कौन होची एसेट डिक्रीज होची एंड जेहेतु एसेट को सेल करा गला तो गवर्नमेंट पाखरे कौन आसला कैश आसला. कैश इंक्रीज होची गवर्नमेंट पाखरे. सो आंसर कौन हबो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू इक्विटी. गवर्नमेंट सेल्स इट्स ओनरशिप स्टेक इन द पीएसयू जहाँ माने होची कि गवर्नमेंट रो एसेट रिड्यूस होची एंड गवर्नमेंट पाखरे कैश इंक्रीज होची काना एसेट सेल कला परे जे एसेट को किनी थिबो से ऑब्वियसली पेमेंट करिथिबो. सो इट इज अ कैपिटल रिसीट जे कि एसेट को रिड्यूस कराए. Question number 18. Market borrowings through issuance of government securities are classified as revenue receipts, non-tax revenue, capital receipts, creating liabilities, capital receipts, reducing assets. Answer of C. Capital receipts creating liabilities. Market borrowings कौन क्वेश्चन रे गोटे कॉन्सेप्ट अछि मार्केट बोरोइंग्स. मार्केट बोरोइंग्स कहले हमें कोन बुझु जेतेबेले गवर्नमेंट को मनी दरकार थाए बियॉन्ड टैक्सेस सेतेबेले से काहाठारु बोरो करे. इट बोरोस फ्रॉम बैंक्स, institutions or public. And borrowing केमिति हुए by issuing the government securities. तो जी गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज को किनिबो से ता बदल रे गवर्नमेंट को पैसा दबो. सो व्हाट हैपेंस इकोनॉमिकली इज जो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को एथरे पैसा मिलला गवर्नमेंट गेट्स मनी टुडे गवर्नमेंट मस्ट रीपे लेटर प्लस इंटरेस्ट. सो एटा गोटे फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट करछि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऊपर. तो कैपिटल रिसीट्स क्रिएटिंग लायबिलिटीज विल बी द करेक्ट आंसर. Borrowing होची capital receipt and future repayment equals to liability created. So capital receipt creating liabilities of a correct answer. Question number 19. Which of the following is the largest component of revenue receipts of the union government? Non-tax revenue, indirect taxes, direct taxes, capital gains. Answer about C. Question number 19 रो direct taxes. रेवेन्यू रिसीट रो मेन सोर्स कोन ऊपर भी रेवेन्यू रिसीट डिस्कस हेई सरलानी. रेवेन्यू रिसीट रो मेन सोर्स होची व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स रेवेन्यू आउट होची नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू अंडर रे कोन आसे जेम डायरेक्ट टैक्स आसिला जोटा कि डायरेक्टली पेमेंट करा जाय बाय पीपल और कंपनीज. इनकम टैक्स हला कॉर्पोरेशन टैक्स हला एंड इनडायरेक्ट टैक्स रे कोन आसुची हला टैक्स रे कोन आसुची गोटे डायरेक्ट टैक्स आसुची और इनडायरेक्ट टैक्स आसुची. डायरेक्ट टैक्स हमें डिस्कस करले इनडायरेक्ट टैक्स रे आसुची जोटा कलेक्ट करा जाय थ्रू गुड्स और सर्विसेज जेम जीएसटी कस्टम बाय एक्साइज. डायरेक्ट टैक्स लार्जेस्ट कोन पाई काना रिसेंट इयर्स रे कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स इट टुगेदर इट दे फॉर्म द बिगेस्ट चंक ऑफ द रेवेन्यू जोटा कि इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन बेटर कॉम्प्लायंस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एगुडी सब रिफ्लेक्ट करूची. सो डायरेक्ट टैक्स रो प्रोपोर्शन होची पोर्शन होची largest. Question number 20. Consider the following statements regarding revenue receipts.
Read the statements and options and answer in 15 seconds. Question number 20 ର answer ହେବ D. All of the above are correct. First, revenue receipt କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, and revenue receipt recurring in nature ଥାଏ, ସେଟା ବି ଆମେ discuss କରିଛେ. Without repeating ଏଟା correct ହେଇଯିବ. Then recurring ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, taxes ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି, dividend ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି, fees ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି. So yes, it is recurring. Statement 2, no liabilities, no asset reduction. This is also correct. And statement 3 କ'ଣ କହୁଛି, affects the revenue deficit. And revenue deficit କ'ଣ, they directly affect the calculation of revenue deficit. Revenue deficit ଆମେ ଜାଣିଲେ କି expenditure ଯେତେବେଳେ receipt ରୁ ବଢିଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ revenue deficit. And deficit କେମିତି calculate ହୁଏ, expenditure minus receipt. ঠিক ଅଛି. So revenue receipt directly determines the revenue deficit. ଏଟା ବି correct ହବ. Question number 21. With reference to the capital receipts, consider the following statements. Borrowing from the largest share of capital receipts. Disinvestment proceeds are treated as the non-debt capital receipts. All capital receipts reduce the fiscal deficit. 15 seconds ଦଉଛି ମୁଁ ଆକୁ answer କରିବାକୁ. ର answer ହେବ A. 1 and 2 only. First, the capital receipt କ'ଣ, real economic terms ରେ. Capital receipt ହେଉଛି those inflows of money ଯିଏ କି either ଗୋଟେ future repayment obligation create କରୁଥିବ ବା liability create କରୁଥିବ, discuss already ହେଇ ସାରିଲାଣି, and reduce କରୁଥିବ government asset. Okay, and they come from only the two sources. Type 1 ହେଉଛି borrowings. Borrowings ଯିଏ କି create କରୁଛି liability, obviously for example loans ହେଲା বা external borrowings or small savings. ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନି ନେଉଛି ଯୋଉଟା କି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଲେଟର ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଦେବାର ଅଛି ତାପରେ. ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ 2 ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସେଟ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଉପରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ କି ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ PSU ସେୟାର୍ସ ହେଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂସର ସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୁଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ଓନରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ସ କ୍ୟାଶ୍ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ. ସୋ
Statement 1 कहला कि borrowing from the largest share of the capital receipt. This is absolutely true. कहीं ना इंडिया गोटे फिजिकल डेफिसिट रन करे एवरी ईयर एंड ये जो डेफिसिट टा फाइनेंस हुए मेनली थ्रू बोरोइंग. सो इन द कैपिटल रिसीट बास्केट रे कौन हुए बोरोइंग्स इक्वल टू डोमिनेंट कंपोनेंट. ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 कहला कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आर ट्रीटेड एज नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कहीं ना डिसइन्वेस्टमेंट रे कौन होची कि गवर्नमेंट बोरो करूनी किछि कि ताकू किछि फ्यूचर रे जाई कि ता ऊपर किछि गोटे ऑब्लिगेशन नहीं कि से पेमेंट करिवो लेटर. सो एठी ओनली ओनरशिप रो स्टेक टा बिक्री होची. ओनली ओनरशिप स्टेक इज सोल्ड. सो इट इज अ कैपिटल रिसीट बट नॉन डेट क्रिएटिंग. कहना एथरे डेट किछि क्रिएट होनी. गवर्नमेंट को जाई कि आगो किछि पेमेंट एथरे करिवार नाही. हेंस इट इज कॉल्ड नॉन डेट कैपिटल रिसीट. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि. स्टेटमेंट 3 is actually incorrect, conceptually wrong. Eta kahingi na jo fiscal deficit achi, it is basically how much the government borrows. All capital receipt reduce the fiscal deficit. It is absolutely incorrect. Kana borrowings fiscal deficit को finance करिया ପାଇଁ ही use करा जाए. So borrowings it do not reduce the fiscal deficit. They actually are the fiscal deficit. Okay, so only non-debt capital receipt reduce the need to borrow. Answer about A. Question number 22. Which of the following correctly reflects the post-COVID trend in India's expenditure composition? Answer is C. Sustained increase in capital expenditure allocation. What problem did COVID create for the economy? COVID कौन problem create करेथिला? First होची कि economic contraction. Second, job losses. Private investment collapse करिगला. And then demand slow down ହେଇଗଲା. So the government had to revive the growth. So government कौन tools use कला for the growth revival? There are two broad tools. First, the revenue spending. Revenue spending. जो सब्सिडीज दिया गला, सैलरीज, वेलफेयर ट्रांसफर्स. ओके, सो रेवेन्यू स्पेंडिंग रे जहाँ जहाँ आसुची दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म रिलीफ बट नॉट बिल्ड फ्यूचर कैपेसिटी. गोटे रेवेन्यू स्पेंडिंग कला आ गोटे होची कैपिटल स्पेंडिंग. कैपिटल स्पेंडिंग रे कौन जो रोड्स है, रेलवेज है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एगुड़ी कौन हम कैपिटल रे स्पेंड कले कि नुआ जॉब क्रिएट हम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आसीबो, क्राउड इन हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रेज हम. So India actually COVID परे कला कौन गवर्नमेंट कॉन्शियसली अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ पब्लिक कैपेक्स लेड ग्रोथ. So every budget after COVID, there's a big increase in capital expenditure. For example, massive hikes in infrastructure outlay, railway, highways, defense production. So capital expenditure share term, it kept rising. So there is sustained increase in the capital expenditure allocation. Question number 23. Which of the following is created as capital expenditure even though it does not create a physical asset?
आंसर हम बी लोन टू अ स्टेट गवर्नमेंट कौन पाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्चुअली कहले आम ऊपर डिस्कस कर सारे कि एसेट क्रिएट होतिबो और से लाइबिलिटीज रिड्यूस होतिबो और फ्यूचर फाइनेंशियल क्लेम से किसी क्रिएट होतिबो ताको कहा जाउची कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक अछि सो व्हाई लोन्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर जेतेबेले सेंटर स्टेट को लोन प्रोवाइड करूची it does not build a road or bridge say loan provide kala it gives a loan to a state but it creates a financial asset that is गोटे legal claim कला state उपरे on future repayment एबे state को center को loan repayment करिवार अछि principal plus interest मिसै कि it will come back to the center so government रा asset side increase हला hence it is treated as the capital expenditure. Question number 24. Consider the following statements regarding the revenue expenditure. It is generally rigid and committed in nature. It directly contributes to asset creation. Then statement number 3. A higher share of revenue expenditure can crowd out capital expenditure. Answer above B. 1 and 3. Revenue expenditure कहले हमें जो देखिले कि जो गवर्नमेंट डे टू डे स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन ପାଇଁ जोड़ा लागुची and maintenance of existing services for example revenue expenditure रा आमे नबा जेमति कि salaries pensions interest subsidies maintenance ठीक अछि तो स्टेटमेंट 1 कहिला कि इट इज जनरली रिजिड एंड कमिटेड इन नेचर सो स्टेटमेंट 1 टा ट्रू कौन पाई कहीं यू कैनॉट सडनली स्टॉप पेइंग सैलरीज यू कैनॉट स्टॉप पेइंग द पेंशन्स सेमती कि इंटरेस्ट ऊपर भी तुम डिफॉल्ट करि परिबनी सेटा पुनी क्रेडिबिलिटी तुमरो लॉस हबो सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लार्जली नॉन डिस्क्रिशनरी स्टेटमेंट 1 नंबर करेक्ट देन स्टेटमेंट 2 इट इज इनकरेक्ट कहना एटा कहिला कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू एसेट क्रिएशन इट इज फॉल्स कहना रेवेन्यू जो स्पेंड होची सेटा कंजम्पशन पई कि होची कंज्यूम्स द रिसोर्सेज डज नॉट बिल्ड न्यू एसेट सो इट इज रॉन्ग a higher share of revenue expenditure can crowd out capital expenditure एटा ट्रू कहीं ना बजेट साइज लिमिटेड अछि इफ रेवेन्यू स्पेंडिंग जदि आगो को बढ़ी बढ़ी चलिबो देन लेस मनी लेफ्ट फॉर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहिला तांको पई कम पैसा बंचिबो सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन क्राउड आउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर दिस इज करेक्ट. With reference to capital expenditure in India, consider the following statements. It includes spending on infrastructure and human capital formation. It has a higher growth multiplier compared to the revenue expenditure. It has no role in reducing government liabilities. Quota correct about 15 seconds. One and two only. Option number A is correct. Capital expenditure कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर आम जानिले जो गवर्नमेंट जेतबले स्पेंड करे आउ जोटा क्रिएट करे लॉन्ग टर्म एसेट्स ताको कहा जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर और बिल्ड्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव कैपेसिटी ओके तो सेथरे कौन जाउची जो एसेट क्रिएशन होची सेथरे तो केवल फिजिकल एसेट जाउनी
फिजिकल एसेट जाउची ह्यूमन एसेट जाउची फाइनेंशियल एसेट जाउची फिजिकल एसेट कहले आमे कोन बुझे जेंति रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहा हैला ह्यूमन एसेट कोन ह्यूमन एसेट हैला एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एसेट कोन लोन गिवन टू स्टेट और पीएसयूज तो स्टेटमेंट 1 नंबर कौन था इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ट्रू कहना इंफ्रास्ट्रक्चर हो ऑब्वियस कैपिटल एसेट क्रिएट होची एंड ह्यूमन कैपिटल कौन एजुकेशन हेल्थ एबे मु जो कहली एसेट केवल फिजिकल तो जाउनी ह्यूमन और फाइनेंशियल भी जिबे इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव सिटीजन्स सो बोथ फॉल अंडर द कैपिटल टाइप इन्वेस्टमेंट लॉजिक स्टेटमेंट 2 रे अछि कि हायर ग्रोथ मल्टीप्लायर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेटा भी ठीक अछि काहे ना कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां मैं कैपेक्स खोजू इट क्रिएट्स एसेट्स then assets it raise the productivity and productivity further raise kon karuchi long term gdp so rupee per 1 rupee spent on infrastructure creates more long term growth more than 1 rupee spent on subsidy ओके स्टेटमेंट 3 टा एक्चुअली इनकरेक्ट अछि काहेकिना स्टेटमेंट 3 कहला नो रोल इन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट लायबिलिटीज एटा फॉल्स काहेकिना कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इंक्लूड्स लोन रिपेमेंट आल्सो सो गवर्नमेंट जेतेबेले लोन को रिपेमेंट करे तो लोन गवर्नमेंट पई कोन जदी गवर्नमेंट लोन काहाटारू नौची ताहले गवर्नमेंट तार निज ऊपर गोटे लायबिलिटी क्रिएट करूची काहेना फ्यूचर रे जाकी ता ऊपर गोटे ऑब्लिगेशन अछि कि से लोन टा को रिपेमेंट करबो एंड से जेतेबेले लोन को रीपे कर दउची तो तार liability fall kurchi when government repays the loans liabilities fall so capex can reduce liabilities answer kon ba answer ba 1 and 2 question number 26 which Gupta ruler first assumed the title of Maharaja Dhiraja Samudragupta Chandragupta 2 Kumaragupta Chandragupta 1 answer kon ba आंसर हम डी चंद्रगुप्त 1 महाराजा धीराज माने कौन महाराजा धीराज माने होची किंग ऑफ किंग्स और सुप्रीम एम्परर एटा सिग्निफाई करे पॉलिटिकल सोवरेंटी imperial status and end of subordination to other powers चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन पाई कहीं ना सी गुप्ता इंपेरियल पावर रो फाउंडर थिले he was the founder and he married लिच्छवी प्रिंसेस जोटा कि गोटे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्रिएट कला एंड ही आल्सो इश्यूड गोल्ड कॉइन्स calling himself Maharaja Dhiraja so he first proclaimed imperial status question number 27 the Prayag Prashasti an important source for Gupta political history was composed by Kalidasa Amarasimha Harisena Visakha Datta आंसर हम सी हरिसेना तो प्रयाग प्रशस्ति एटा कोथरे अछि अलाहाबाद इनस्क्रिप्शन एंड एटा लेखा है जी संस्कृत रे एंड समुद्रगुप्तंकर जो थिला कॉन्क्वेस्ट थिला से ताको प्रेज करे
एंड तार कोर्ट एंड से कोर्ट पोएट किए थिले हरिसेना. Praised, conquests. The Gupta administrative division known as Bhukti was headed by a Vishayapati, Gramika, Uparika, Mahadanda Nayaka. Answer of C, Uparika. Gupta administration रा hierarchy केमती थिला empire. First तो थिला empire उपरे सभा उपरे. Then आसीबो भुक्ति जहा को कहूथिले province and भुक्ति को किए head करूथिले उपारिका जहा को जोड़ा एठी अछि क्वेश्चन रे. तापरे थिला विषय. विषय माने district headed by Vishayapati. Then third village Gramika headed by Gramika. Question number 29. Which tax during the Gupta period represented forced labor? Bhaga, Hiranya, Sulka, Vishti. Answer number D, Vishti. Vishti माने कौन थिला? Vishti माने एटी क्वेश्चन रे देइची forced labor provided free by peasants for roads, canals, fort. Okay. Question number 30. Gupta gold coins are commonly referred as Nishkas, Karshapanas, Dinaras and Suvarnas. Answer about C, Dinaras. Gupta gold coin modeled on Roman dinars, hence called Dinaras. Question number 31. Which Chinese traveler visited India during the reign of Chandragupta II? Xuanzang, Aitizing, Fa Hin, Sung Yun. Answer is C, Fa Hin. Fa Hin Chandragupta II का time रे visit करिथिले and he described administration and कौन describe करथिले justice से time रे कौन थिला and Buddhism. Question number 32. The earliest known structural stone temple of the Gupta period is located at Bhitargaon, Udayagiri, Sarnath, Devgarh. Answer about A, Bhitargaon. Bhitargaon temple eta kodi UP. Okay, brick and stone structural temple eta gote just a second. Stone structural temple and eta kebe hitla Gupta period re. Question number 33. Which Gupta ruler is credited with founding Nalanda Mahavihara? Samudragupta, Chandragupta II, Kumaragupta first, Skandagupta.
Question number 33 ର correct answer habo Kumaragupta first. Nalanda kebe found itla? It was found Nalanda Mahavira. Nalanda was found in 5th century CE. Okay, and patron ke thile Kumaragupta first. The famous iron pillar near Qutub Minar is primarily significant because of its height and inscriptions, decorative sculpture, rust resistant metallurgy, religious symbolism. Answer about C, rust resistant metallurgy. It has 1600 year old iron rehechi, no rust, ete rust lagibani, and it also showed advanced metallurgy. The Hun invasion that seriously weakened the Gupta Empire occurred mainly during the reign of Kumaragupta I, Chandragupta II, Skandagupta, Buddhagupta. Answer about C, Skandagupta. Skandagupta, he fought Huns and temporarily saved the empire. But finances exhaust ହେଇଗଲା. Just a second. Huh. But finances exhausted. Question number 36. Consider the following statements regarding the Gupta economy. Land grants to Brahmanas contributed to the rise of the feudal tendencies. Guilds or srenis functioned as autonomous economic and judicial bodies. Question number 3. External trade expanded significantly with the Roman Empire throughout the Gupta period. Which of the statements given above are correct? Answer above B, 1 and 2 only. So, what kind of economy did the Gupta Empire have? Gupta economy actually mixed thila. It was mixed economy with agriculture as base, then crafts thila, and crafts thrive କରୁଥିଲା, guilds thila, active inland and foreign trade thila, growing land grant system thila. Okay, kintu structurally it was moving from centralized classical economy to decentralized semi feudal economy. The statement wise हमें देखिया गले statement 1 रे कहला कि land grants to brahmanas contributed to feudal tendencies. Yes, कहीं ना एटा ट्रू कौन पाई फ्रॉम द गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड किंग्स माने कौन कले से माने टैक्स फ्री लैंड रेवेन्यू राइट एगुड़िक सब ग्रांट करवा स्टार्ट कले इवन एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल राइट भी ब्राह्मण मान को ग्रांट करवा स्टार्ट कले एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी से माने ग्रांट कले एंड ये जो grantees thile they collected revenue from the peasants, exercised their local authority and became semi autonomous landlords. So it created what? It created local power centers. Local power centers create kala and central control को further reduce कला. Dependence of peasants on
landlords भी एटा create कर देला. So this is exactly what historians call early Indian feudalism. So statement 1 is correct here. Statement 2 भी correct अछि काना जो guilds बा श्रेणी थिले, it functioned as the autonomous economic and judicial bodies, which is true conceptually. काना जो guilds थिला, they were not just business association, they regulate the wages. They regulate the wages, prices, quality of goods, and training of artisans. Okay, and they also maintained their own funds. ସେମାନେ loan भी issue କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର internal dispute resolution mechanism ବି ଥିଲା. So they acted as witnesses in land transactions. ବହୁତ ଗୁଡ଼େ town ରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା କି जो guild rules ଥିଲା, they were legally recognized by the state. So जो guilds ଥିଲା, they had economic autonomy, judicial और regulatory authority भी ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା. So statement 2 ବି correct ଅଛି. Statement 3 is incorrect କାହିଁକି ନା Indo-Roman trade it peaked earlier during the Satavahana and early Kushana period. Gupta period रे कौन है Roman Empire itself was declining, so gold inflow from Rome reduced, long distance maritime trade भी weaken हे गला, so trade exist करूथिला किंतु it did not expand significantly throughout the Gupta period. So statement 3 is incorrect. Answer above 1 and 2 only. Question number 37. With reference to the Gupta administration and polity, consider the following statements. The Gupta state was more decentralized than the Mauryan Empire. Samantas emerged as powerful intermediaries due to land grants. Judicial authority was completely centralized under the king. Which of the statements given above are correct? Answer about A. 1 and 2 only. Mauryan versus Gupta state जदि आमे कंपेयर करबा बुझबा तांकर गोटे बड़ स्ट्रक्चरल डिफरेंस अछि. सो मौर्यन स्टेट अशोकଙ୍କ अंडर रे Mauryan state under Ashoka highly centralized. Then massive bureaucracy, direct control over provinces, officials, revenue and justice. And as compared to Mauryan state, Gupta state kon thila? It had much lighter bureaucracy. Then local autonomy. Third, बहुत गुड़े फंक्शन डेलीगेट कर दिया जाइतला. Delegated functions to local chiefs, land grantees, guilds and village bodies. Okay, so Gupta state kono eta structurally decentralized thila. Statement 1 logically correct achi kana Gupta state was more decentralized than the Mauryan Empire because more autonomy to provinces, bhuktis, more power to local officials, judicial or fiscal rights granted to grantees, decline of rigid bureaucracy. Statement 1 is correct. Statement 2 এটা भी करेक्ट अच्छी कहना जो सामंतस थिले दे emerged as powerful intermediaries due to the land grants. सामंत किए जो local chiefs रहिले, local chiefs, feudatory rulers and big landlords.
ଏମାନଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ କହୁଥିଲେ। ଦେ ରିସିଭ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ସେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ମିଲିଟାରୀ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗଙ୍କର ସୁଜରେନିଟିକୁ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିକି ସେ ରଖୁଥିଲେ। ସୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଦ ସାମନ୍ତସ୍। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 3 ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଭିଲେଜ କାଉନସିଲ୍ସ, ଗିଲ୍ଡ କୋର୍ଟସ୍, ଗ୍ରାଣ୍ଟିଜ୍, local officials, they all exercise judicial power. So justice highly decentralized ଏଠି ଥିଲା, justice ଟା completely centralized ନଥିଲା. So this is incorrect. Answer of 1 and 2. Question number 38. Operation Black Forest, highlighted in the MHA Year End Review 2025, is primarily associated with what? Giving 10 seconds. Answer of B. Counter Naxal operations in Chhattisgarh. What problem is the government addressing here? Government एटी को problem टाको address करुचे? एटी obviously LWE ही address होची, जोटा को left wing extremism कहती. India faces left wing extremism mainly कोठी को जगह रे? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा and Maharashtra. So MHA বা मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से स्पेशल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन रन करती. सीआरपीएफ प्लस स्टेट पुलिस प्लस इंटेलिजेंस गोटे कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन रन करा जाए. जंगल वॉरफेयर टैक्टिक्स भी एठी रन करा जाए. जंगल वॉरफेयर टैक्टिक्स भी रन करा जाए. सो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कौन? एटा गोटे फोकस्ड काउंटर नक्सल ऑपरेशन. Counter Naxal operation conducted in the forested areas of Chhattisgarh. एथिरे को माने टारगेट होचन, एथिरे माओइस्ट हाइडआउट्स, लॉजिस्टिक एंड कैडर्स से सब टारगेट होची. हेंस एटा गोटे LWE सप्रेशन ऑपरेशन, नॉट टेररिज्म और कश्मीर. Question number 39. The Bharat Poll portal launched by the CBI strengthens India's cooperation with. 10 seconds starts now. Answer above B. Interpol. What real world problem does Bharat Poll solve? आजिकल ये जो क्राइम अच्छी, फॉर एग्जाम्पल क्राइम्स टुडे आर ट्रांसनेशनल, माने नेशनल बाउंड्रीज जाए सीमित नुह, साइबर बेस्ड, फाइनेंशियल एंड टेरर लिंक्ड. सो इंडिया रे जो एजेंसी माने रहिले, दे कॉन्स्टेंटली नीड रेड नोटिसेस, foreign arrests, evidence from abroad and criminal data sharing. भारत पोल कौन? भारत पोल हो गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय सीबीआई, launched by CBI. It is mentioned here for Indian agencies to coordinate with what? To coordinate with Interpol. It streamlines the red corner notices, international investigations, information exchange. So whole logic तार कौन कि Interpol संगे लिंक करिवा. Answer above B, Interpol. Question number 40. The Immigration and Foreigners Bill 2025 aims to primarily streamline refugee asylum policy, deportation of illegal migrants, visa entry and exit management, citizenship acquisition rules.
15 seconds ଦଉଛି ମୁଁ ପାଇଁ। Answer is C. Visa entry and exit management. What is this bill about? जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल रहा 2025 रो जोटा पार्लियामेंट रे पास करा जाइची टू व्हाट टू मॉडर्नाइज एंड कंसोलिडेट इंडियाज इमिग्रेशन फ्रेमवर्क एंड एटा गोटे जो आउटडेटेड लॉस मान को रिप्लेस करूची जो गुड़िक 1920 रु 2000 जाए चली आसी एंड इट क्रिएट्स अ सिंगल plus integrated legal regime for what? For entry into India, stay into India, movement within and exit from India, and visa rules and immigration procedures. Okay, जोटा कि आमे ऑप्शन रे देखले ऑप्शन नंबर सी हबो. सो ए जो नुआ लॉ इट कवर्स द पासपोर्ट वीजा रजिस्ट्रेशन डिपार्चर सब को कवर करूची इन अ स्ट्रीमलाइंड एंड सिस्टमैटिक मैनर. Excuse me. 41. Census 2027 as announced will be conducted in which manner? Single phase digital census, two phase census including caste enumeration, rolling census over 5 years, register based census only. Answer of B. Two phase census including caste enumeration. जो 2027 census of India, it is planned as the 16th national census and it is being organized in two distinct phases. गोटे होचे हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस करा जिवो दीटा फेज हबो गोटे होची हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस एंड एटा चालिबो केबेठारु एप्रिल टू सेप्टेम्बर 2026 एंड सेकंड कोन हबो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जोटा कि हबो फेब्रुआरी 2027. Importantly, a census टा include करूची caste enumeration for the first time since 1931 जोटा कि गोटे significant expansion रही in the scope compared to the recent censuses. Question number 42. The proposed 30th Constitutional Amendment Bill seeks to bar convicted persons from contesting elections, remove governors upon indictment, disqualify jailed persons from the constitutional posts, curtail judicial review powers. Forty-two answer about C. Disqualify jailed persons from the constitutional posts. 130th Constitutional Amendment Bill 2025 एटा propose करुची कि जो Article 75 हमारा रहिला 75, 164 and 239 double A of the Constitution कि एथिरे changes आसीबो. प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर यूनियन स्टेट मिनिस्टर और इक्विवेलेंट जो माने भी रहिले तांको सहित यूटीज रे बा यूनियन टेरिटरीज रे मस्ट सीज टू होल्ड ऑफिस इफ अरेस्टेड और डिटेन्ड सीज टू hold office
if arrested or detained for 30 consecutive days for an offense punishable with 5 or more years. ठीक अछि एथरे किछि conviction require होनी detention itself it triggers the removal after the specified period. So our aim होची कि जो माने constitutional executive post hold करूचंदी post conditional not on being jailed for serious offenses. Okay. Question 43. Consider the following statements regarding the recent internal security measures. Operation Black Forest reflects the near elimination of left-wing extremism. The multi-agency center focuses on intelligence coordination against the terrorism. Bharat Pol is operated by the Ministry of External Affairs. A already statement-wise ऊपर question रे individual question रे discuss ही चार्ची. Very easy. Just giving 10 seconds instead of 15 seconds for this. Obviously এটা 1 भी डिस्कस ହେଇଛି ଉପରେ 2 भी डिस्कस ହେଇଛି भारत पोल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर रे जाउनी एटा भारत पोल जाउची इट ऑपरेटेड बाय द व्हाट भारत सीबीआई ठीक अछि टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन विथ व्हाट इंटरपोल आंसर अबाउट 1 and 2. Question number 44. The recently discovered cluster over 30 hero stones with Odia inscriptions in Odisha was reported from villages, village or districts ro kichi na deichi. Just read and answer it in 10 seconds. Answer above B. Malisahi village, Puri district. Good cluster, more than 30 hero stones with Odia inscriptions on it was identified at Malisahi village under the Gadakharda Gram Panchayat in the Konasa block of Puri district Odisha. And ए जो गुड़ा रहिले जो वीर शिलास जाओ कहते मेमोरियल स्टोन दे रिफ्लेक्ट रीजनल मेडिवल हिस्ट्री एंड एपिग्राफी. Next question. Danda Nacha, proposed for UNESCO recognition, is best described as a classical dance associated with Odissi tradition, a ritualistic folk dance involving penance and endurance, a martial dance linked with the Paika rebellion, a harvest dance performed during the Nuakhai. Forty-five रहबो B. A ritualistic folk dance involving penance and endurance. It is a traditional folk ritual dance जो कि body discipline, prayer to goddess Shiva or Kali from Odisha's Ganjam region एटा follow हुए.
Then the MOU between Odisha's Agriculture Department and Heifer International focuses on strengthening value chains of rice and pulses, cotton and sugarcane, ginger, turmeric and millets, oilseed and the horticultural crops. Answer about ginger, turmeric and millets. Question number 47. The newly constituted Mahanadi High Level Committee in Odisha is chaired by. It is chaired by option number C, Deputy Chief Minister KV Singh Deo. Okay. Sahasa Utsava recently concluded in Odisha primarily relates to women entrepreneurship promotion, prevention of gender-based violence, child nutrition awareness, legal literacy for rural women. Answer above B. Prevention of gender-based violence. Concluded as a GBV prevention program. Gender-based violence prevention program. Okay. 49. The AI-based social robot developed by the NIT Rourkela is notable for what? Read the options and answer. 10 seconds starts now. Answer number B. Emotion recognition and natural language interaction. Okay. And এটা built ହେଇଛି to interact, recognize emotion and hold the conversation. ଆଜିର last question କୁ ଯିବା. Consider the following statements regarding LRI Rath initiative in Odisha. It has been launched under the World Bank supported reward project. LRI card assists farmers with the land suitability and soil specific recommendations. The movement of LRI Rath is digitally monitored through an MIS mobile application. Which of the statement given above are correct? Answer number D, 1, 2, 3. All the statements are correct. Eta under World Bank supported reward project under launch ହେଇଛି. LRI card से farmers ମାନଙ୍କୁ assist करे with land suitability and soil specific recommendation. And जो LRI Rath ର movement एटा digitally monitor करा जाए through MIS mobile application. So all the three are correct. And with this we have completed the 12th mock test MCQ discussion. Next week ame 13th mock test discuss kariba, most probable MCQs. So that is it for today. Thank you for watching. Thank you.